Supplementary is for orders item 2, 7 April 460 of 2018. This appeal is dismissed. This case item 3, 7 April 87 of 2025. Are you there? The appellant has filed for the stay of the proceeding in execution. ठीक क्या होगा? तो ये क्या? अभी तक तो substantial question of law बना नहीं है। ऐसा कुछ अब नहीं स्टे का कोई बात ही नहीं, अब सुनेंगे जब तक substantial question of law नहीं बनेगा तब कोई स्टे। जी। बताइए। This is plaintiff secondary law. Plaintiff is sorry, this is defendant secondary law. Plaintiff instituted eviction suit law. For evicting the plaintiff in the plot number 152 law. The suit was declared in their favor law. Just a moment. राइटिंग पैड जो है ना थोड़ा सा अजीब होता है। Yes, the appellant is different before the court. Relative instituted suit law, eviction suit law. For evicting the defendant's law. For evicting from the plot number 152, area 2 katta. Area is required. No, that is a suit premises. Suit premises is not in this. Yes, okay. The plaintiff is claiming that Underground. at paragraph 1 they have stated that they are the owner of the landlord. Owner and the landlord. Paragraph 1 of the plaintiff. They have stated the plaintiff. Actually, they would claim that they are the owner and the landlord. Yes, they are claiming lawsuit, That's right. but in the paragraph number 31 of the deposition of PW5, who is plaintiff lawsuit, who stated that विवादित संपत्ति व जमीन खास महल की है. So, Yes. PW5 says that it is khas mahal. Yes, is खास महल property lawsuit. And the defendant was inducted as a tenant lawsuit on 1/2/1996 lawsuit. 1996. Did he pay rent? Did Yes, he pay rent? yes, initially he paid So rent. initial relationship is not in dispute. Yes, initial relationship is not disputed. So, as per plan of the paragraph 5 laws, lease was for the 11 months laws. 11 months. The period for the lease was for 11 months laws. And the plaintiff paid laws, but thereafter paragraph 7 laws, it is listed in the plaintiff laws, but defendant has not paid rent to the plaintiff from 13/1/97 till 9/7/2003. 9/7/2003. 2003. When was the suit filed? Yes, suit was instituted lawsuit in the year 2003 lawsuit. Date. Anyways, 2003 the suit was instituted. Yes, suit was instituted in the year 2003 lawsuit. After 6 years lawsuit. So it has become barred by limitation. No, I am not saying bar by the It limitation. is irrelevant. No, it is very Every month is a cause of action. They cannot claim more than 3 years, but every month is a cause of action. yes, sir. Because they have not bring the suit lawsuit within time lawsuit. That is why you want to say The- it's barred by as, limitation. yes, as per section 11(1) of the BBC Act lawsuit, Yes. they have instituted suit under section 11(1) D lawsuit, Yes. where the amount of 2 months rent lawfully payable by the tenant and due from in arrear is not having been paid within time fixed by contract. 2 months is there lawsuit. For because they have instituted suit for तो default, आपको मेरा बात नहीं समझ आ रहा है तो हम कुछ कर नहीं सकते. because they have instituted. Default, once there is a tenancy and the tenancy is admitted, right? Every default is a cause of action. Every default is a cause of action, and the law is well settled. कि arrears of rent 3 साल से ज़्यादा का देना. Simple. हर 2 महीना होने पर the cause of action commences.
बट ऐसा नहीं है कि 3 महीना होने पर कॉज ऑफ एक्शन खत्म हो गया। ये तो आपको पता है, क्यों ऐसा बहस करते हैं? ये एरियर भी मांगे है, 3 साल का मांगे, जबकि ये कर सकते थे 3197 से। अगर ये एडमिट कर रहे हैं कि हम पेमेंट नहीं किए, तो 3197 से ये एरियर हमसे नहीं डिमांड कर रहे हैं। ठीक, दे आर डिमांडिंग द एरियर ऑफ द रेंट्स लॉर्डशिप फ्रॉम 2000 to 2003 लॉर्डशिप। राइटली सो, बिकॉज दे नो कि 3 साल से ज्यादा का क्लेम नहीं कर सकते। Now we have created in WS lordship, that is Exhibit D, that is the agreement deed of agreement lordship. Exhibit D is the deed of agreement dated 13/11/1997. 13/1/19 13/11/1997. 13/11/1997. Yes, sir. Yes, I am permitted to read of the agreement lordship, which is very vital for this. इकरार नामा, I have not separate copies. बढ़िया, तो आपको क्या रेलेवेंट लग रहा है? ये सब दिखला रहे हैं। इन पैराग्राफ यह कि यह प्रथम पक्ष अपने होश हवास तथा ये हुआ है एग्रीमेंट में है सर्व एग्रीमेंट 13/11/97 MS खाजमा एंड सर्वर मेजर में यह कि प्रथम पक्ष अपने होश हवास तथा खुशी से अपने खाता नंबर प्लॉट नंबर में पुराना होल्डिंग नंबर सेकंड से म्युनिसिपैलिटी नंबर इतना में 3 कट्ठा में करीब 2 कट्ठा जमीन जिस पर पक्का का मकान बना हुआ है। इस पक्के मकान में 3 तरह के बावर्ची खाना, एक लैट्रिन और एक बाएं हाथ में प्रवेश के लिए 5 फीट का रास्ता है। उत्तर में एमएस पजामा का घर है। यह किस लिए पढ़ रहे हैं? इतना कहानियां किस लिए पढ़ रहे हैं? हम दिखा दे बस ये दिखाने वाला चीज दिखा। हाँ दिखा दे। कौन सा क्लॉज? पैरा 8 में बोलते हैं कि सर्वर मीडिया हैज टू पे ओनली 80,000 एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री। 2,80,000 का एग्रीमेंट हुआ था। 2 लाख रुपया ऑलरेडी हम दे चुके हैं इनको। 80,000 इस एडमिट करें कि हम जब रजिस्ट्री होगा उस समय देंगे। एंड दिस फैक्ट दैट द लैंड इज ऑफ नेचर ऑफ खास मैन लॉर्डशिप, दे हैव सबटेन दिस फैक्ट लॉर्डशिप एंड चीटेड द प्लेंटिफ लॉर्डशिप दैट आई विल शो आल्सो फ्रॉम द अदर एग्जिबिट लॉर्डशिप। आपके पास टाइटल है? Are you the owner of the property? He is also not the owner lordship. Kindly. So therefore, under landlord-tenant relationship, only prima facie has to be seen. आपको टाइटल डिक्लेयर कराना है, डिक्लेयर कराइए। आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराइए। वो तो आप करवा नहीं पाइए। नहीं, ये हम अपने WS में भी डिनाई किए कि बिकॉज जब जिस दिन सब एग्रीमेंट हो गया, दोनों में एग्रीमेंट टू सेल हो गया, देन द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट सीज। ऑटोमेटिक नहीं होता, प्लीज। नो ऑटोमेटिक नहीं होता। नहीं, वो हम दिखा दें क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी एग्रीमेंट से। आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किए थे ना, क्या हुआ? जीते कि हारे? नहीं, वो डिस्मिस हो गया। बट दैट इज नॉट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हैज बीन डिसमिस्ड, एडिटेड फैक्ट। यस सर। कब डिसमिस हुआ? उसके अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आई एम नॉट डूइंग दैट स्पेसिफिक। आपके पास है ना जजमेंट की कॉपी? आप कल दिखाए थे रिस्पोंडेंट। हाँ, मेरे पास सिविल अपील का है। लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आपका डिसमिस हो चुका है। ये तो एडमिटेड फैक्ट। ये एडमिटेड फैक्ट। सूट डिसमिस हो गया, फिर फर्स्ट अपील भी डिसमिस हो गया। सिविल अपील है, ये डिसमिस हो गया। ठीक। Now I want to show lordship, exhibit C lordship. ये सूट का आप सेकंड अपील में है ना? हाँ सेकंड अपील के हिसाब से पैसे। हाँ, पॉइंट ऑफ लॉ बताइए, कौन सा पॉइंट ऑफ लॉ आपका है? कौन सा फ्रेम किए? टेल अस। एक करके पढ़िए तो कितना सारा बना है? 10-20 बना दिए हैं क्या? सेकंड तो हाउ मेनी सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैव बीन? टेबल को पढ़ देते हैं। और एक सेंटेंस एक पेज से भी बड़ा है। तो सेंटेंस का ब्रेक होता है कि एक पेज का एक सेंटेंस। एक लॉ पॉइंट भी फ्रेम किए। बताइए कौन सा आप फ्रेम? फर्स्ट टर्म भी लिखा है।
Para number? Para 6, 8 and 9 also. Para 6 I will produce the para 6. Just a moment. 6, 8 and 9. Six के पहले para 4 पढ़ी. The terms of the agreement. Para 4. As aforesaid, the question for consideration is whether the status of tenant has such changes on the execution of agreement of sale with the landlord is relevant at this juncture. First, examine the terms of the agreement of sale. The relevant portion of the agreement of sale record the following. I, the aforesaid Mrs. Patrick Jagers hereby agree out of my own free will to sell, convey, and transfer the property to Mrs. R. Kanimati, wife of Mrs. R. Ramaswamy, 435 Tilchi Road, Coimbatore, for a mutually agreed sale consideration of rupees 25,000. I shall proceeding to Coimbatore and shall execute a sale deed and present the same for admission and registration before the registration of the accepting and acknowledge payment of the balance of consideration of rupees 5,000 at the time of registration, and shall complete the transaction of sale on convenience of the property dismissed has already been surrendered to your possession. Para 6. Any dual relationship between two persons could be created through agreement and similarly could be changed through agreement subject to the limitation under the law. Earlier, when the parents were inducted into tenancy, it only means both agreed Para that they 5 क्यों omit कर? Para 5. Submission for the tenant is after entering into agreement. The landlady accepted 20,000 confirming delivery of possession in this context, which already constitute the clear intent of the landlady of entering into a new relationship with the tenant under it. On the other hand, learned counsel for the respondent submitted the word already been surrendered. They only refer to the illicit possessions of the tenant and nothing more. So far as this submission for the respondent is concerned, we have no hesitation to reject the same. The reference for the word already been surrendered has been incorporated with consistency. This is to be construed in the background of the landlady having received a major amount of the sale consideration as normally if a substantial sum is received by the seller, the purchaser is put in possession of the property, hence to fall in the same and the said words were used to confirm the disposition in this context. There could be no other reasons on record therein as such. Even if it is to be said that refer to the possession as a tenant, the reassertion in the agreement of the sale is only for the purpose of denoting possession, even in the purpose of this agreement of sale. Para 6. Any dual relationship between two persons could be created through agreement and similarly could be changed through agreement subject to the limitation under the law. Earlier, when the parents were inducted into tenancy, it only means both agreed that their relationship was to be that of landlord and tenant. Later, when the landlord decided to sell the property to the tenant and the tenant agreed to enter into the agreement, they by their positive act change the relationship as purchaser and seller. When the seller landlord accepts the sum, he actually acts under this agreement. This acceptance proceeded by agreement of sale changes their relationship. This is how they intended. Once accepting such a change, the relationship of landlord tenant ceases. I mean, read para 8 or 7. Para 8 is important. This decision clearly spells out that once there is an agreement for sale between a landlord and a tenant, the old relationship as such comes to an end. It goes on to record that even after the cancellation of such agreement of sale, the status of tenant is not restored. As such, in other words, on the date of execution of the aforesaid agreement of sale, in their status as that of landlord and tenant changed into a new status as that of the purchaser and seller. Thus, within this legal premises, the submission by learned counsel for the respondent for revival of their old relationship of landlord and tenant, when she repudiates this agreement by sending back to the tenant rupees 20,000 through a check, which according to the plan was not in cash, cannot be accepted. So we have no hesitation to reject the same. Every conduct of the landlady, right from the date of entry into the agreement of sale, accepting money towards the sale consideration, delivering possession in lieu of such agreement, all clearly indicate that it has to be construed in law that she repudiated her own relationship of landlord and tenant. Thus, after this, parties enter into a new block of sellers and purchaser, and the relationship is to be governed under the set terms of the agreement. Every right and obligation thereafter would flow from it. Even by parties under the agreement of sales do not perform their obligation, remedy may be available in law as permissible. Under this law, we have no hesitation to hold that the court below, including the High Court, committed error in holding that the tenant
committed willful default when the applicant is no more the tenant, how can non-payment be considered as willful default? Accordingly, we find meeting this appeal and the same which allowed the judgment of the High Court and the rent controller and the appellate authority is hereby satisfied. However, this is without prejudice to the right of the parties to pursue the remedy as available to them under the law of the parties. Initially, lordship, the land was settled lordship by the state lordship. It has come also in the appellate court orders lordship in favor of in 27/4/1942 lordship in favor of Naiman Usha. The land is husband lordship and without taking permission lordship. Naiman Usha also sold the land आपको lordship. पता है राज्य में कितना खास मायने में आपको आइडिया या नहीं आइडिया सारे पे टेनेंट्स बैठे you have any idea Is here the defendant is not defaulter lordship. Defaulter is the plaintiff lordship who did not perform his duty lordship. वो अपने बोले कि हम रजिस्ट्री हम करवाएंगे जब 80,000 हम रजिस्ट्री करवाएंगे तब उस दिन आप आपस से रजिस्ट्री तो हो ही नहीं सकता है ट्रांसफर हाँ तो वो वही तो बोले रजिस्ट्री हो ही नहीं सकता जबकि आप एफआईआर भी नहीं कर दिए हम एफआईआर भी किए हुए क्रिमिनल केस भी हम लोग किए थे हम लोग साथ में चीटिंग किया वो लॉयर है उनको मालूम है कि ये खास में और अपने एविडेंस में भी उतना नहीं देखेंगे ना आप अपना टाइटल डिक्लेयर करेंगे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप हार गए आप क्या बचा जब आप स्पेसिफिक नहीं परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंडक्ट इसलिए क्योंकि ये ऑनर है ही नहीं ना जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप जीते हैं कि हारे नहीं वो हार गया सेकंड अपील के बारे में उनको पता नहीं है लेकिन दोनों कोर्ट से हमारे भी है लेकिन पर ये जब ये ऑनर ही नहीं तो एक्सक्यूट इनके अगेंस्ट में कर सकेंगे ये ऑनरशिप इनका ये तो है ही नहीं ये तो बोर्ड है कि विदाउट परमिशन का जमीन का ट्रांसफर होते ही है अब काइंडली सी द अपीलेट कोर्ट ऑर्डर लॉर्डशिप पैराग्राफ आप एग्रीमेंट दिखाइए हमको जो भी दे एग्रीमेंट एग्जिबिट एग्रीमेंट एग्रीमेंट ये काटा हुआ क्यों यह कि द्वितीय पक्ष 3/5/99 तक उपरोक्त जमीन और घर के रजिस्ट्री करते हैं हमको हमेशा इंप्रेशन में ये और ये अन्यथा अवधि समाप्त हो जाने के बाद ये सब काटा हुआ क्यों कटवा दिया गया था इन्हीं का एग्रीमेंट has been deleted जी उन्हीं का दोनों केस से कटा हुआ है। अन्यथा अवधि इसको काटा हुआ है अन्यथा अवधि समाप्त हो जाने के बाद इस कागज को के मुताबिक किसी का कोई दावा द्वितीय पक्ष का नहीं उन्हें फिर एग्रीमेंट कराना होगा और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है उनको जो 3/5/99 तक का समय दिया गया था ये इसी हमको बोले थे कुछ लिटिगेशन है इसको हम क्लियर लीज रिन्यूअल के लिए जो केस भी किए उसमें जब डीसी वही एग्जिबिट सी उसमें डीसी का ऑर्डर हुई कि ये दोनों के बारे में बोला गया है इसको एग्जिबिट सी के ऊपर से हटा देना चाहिए एग्जिबिट सी इज देयर सी में क्या हुआ रेंट रिन्यूअल लीज रिन्यूअल केस में डीसी उनका लीज कब एक्सपायर उसमें बोले कि किसी को खास महल का लीज कब एक्सपायर ये तो इनके फेवर में लीज कभी हुआ ही नहीं था
लीज हुआ था 1942 में, 1942 में हुआ था, 27/4/1942 में हुआ, नईमन निशा के फेवर हुआ था। नईमन निशा बिना ये सब फैक्ट को ऑब्जर्व किया गया। नईमन निशा रजिस्टर्ड डीड 10/7/61 को बिना डीसी के परमिशन के ये बेच दिए मुस्मात काबुलान को। मुस्मात काबुलान ने रेप जनरल पैट्रिक को भी बेच दिया 2/8/1984 को। अब रेप जनरल इनको गिफ्ट किए, ये बोले तो दोनों नसीहती गिफ्टेड बोथ आर नॉट परमिसिबल। वहाँ तो पब्लिक खास महल का लीज एग्जिबिट हुआ है? खास महल का लीज डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ है? इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? हाँ एग्जिबिटेड हाँ, डॉक्यूमेंट है? हाँ, जो इनके फेवर में हुआ है वो एग्जिबिट हुआ है। इनके फेवर में ये फर्स्ट जो ये ओरिजिनल लीज डीड और नई मुनिशर, यस डॉक्टर, वो एग्जिबिट हुआ है। एग्जिबिट नंबर कौन सा? वो है एग्जिबिट नंबर बी 27/4/1942। इसका मतलब टेनेंसी एग्रीमेंट ही गलत है, राइट? स्टार्टिंग से सही था, नई मुनिशा के स्टार्टिंग में कैसे सही होगा? नई मुनिशा स्टेट उनके फेवर में किए थे, ठीक है, सरकार की थी। तो भी उसके खास बाद- महल का तो टर्म्स एंड कंडीशन ही होता है कि आप सबलेट नहीं कर सकते, सबलेट आप नहीं कर लीज नहीं कर सकते, सकते, yes। तो फिर आपका टेनेंसी ही गलत है। इनका टेनेंसी ही गलत है। आपका भी तो टेनेंसी गलत है, खाली इनका टेनेंसी क्यों? जब इनको मालूम था ये खास आपको नहीं मालूम है खास महल? नहीं, हमको नहीं पता था ना। हमको जब ये पैसा तो ले लिया तो 2 लाख अगर खास महल है तो दोनों का ही ना गलत है। आपको टेनेंट कैसे एक्नॉलेज करके आपको ये रिजेक्ट कर सब देगा? 2 लाख इनको पैसा भी नहीं लेना चाहिए। उनको जब अच्छी तरह से मालूम, एविडेंस भी अपने गवाही में बोल रहे हैं कि हमको पहले से पता कि तो खास आपने में अपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में रिकवरी ऑफ मनी के लिए नहीं प्रे किया था? हम लोग तो चूंकि उनको ऑनरशिप मान रहे क्यों थे। नहीं किए रिकवरी ऑफ मनी के लिए? If the court cannot grant you specific performance for one or the other reason, you have a right for recovery of money, whatever you are paid. You did not make a prayer for recovery of money, did you? इसके बाद में हम ये जमीन परचेस करने के बाद हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी किए, फर्स्ट फ्लोर भी हम बनाए। और उस पर जब हम फर्स्ट फ्लोर बनाए उस पर ये कभी ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं किए। और ये अपनी गवाही भी बोले कि इस पीरियड तक 97 से 2003 के बीच में हम कभी नोटिस भी नहीं दिए इनको खाली करने के लिए। एक बार भी उनको नोटिस नहीं दिया। 97 से 2003 6 साल के बाद में सूट ला रहे हैं। जब लीज के जब केस हुआ तो अगर 100 साल पुराना भी एक भी रेंट रिसीट प्रूफ हो जाए ना, 100 years पुराना, a person who is a tenant is always a tenant. नहीं तो ये बोल रहे हैं कि 13/1/97 के पहले प्रायर टू लिखे हुए अपने खुद प्रिंट में प्रायर टू 13/11/97 देयर इज नो ड्यू ऑफ रेंट। मेरा कोई भी ड्यूज नहीं था। 96 से इंडक्ट हुए हैं। तो आप तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हार गए ना। इनका जो भी राइट था, व्हाटएवर बी इज राइट, आपका तो राइट बिल्कुल खत्म हो गया हर तरह से। वंस यू लूज द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये सूट तो एविक्शन सूट का लेकर है 14(1)(d) में लेकर है। ये दैट इज डिफरेंट इशू लॉट। What, it is not a different issue. You are claiming title by saying that you are in possession of the property by virtue of an agreement. एग्रीमेंट, यस सर। उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका हार गया, तो आपका क्या राइट है उस प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने? नहीं, उसमें तो हो सकता है कुछ सेकंड अपील में भी उसमें भी हो सकता है, तो नहीं जब होगा तब अपना करवा लीजिएगा। अगर आप सेकेंड अपील जीत गए तो आप एग्जीक्यूट करा लीजिएगा ना, फिर आपको कौन रोक सकता है एग्जीक्यूशन? नहीं तो जब ये रिलेशनशिप जब खत्म सीज कर गया, लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप जब जजमेंट हम जो शो कर रहे हैं, जब रिलेशनशिप सीज कर गया तब तो माय राइट हैज अक्रूड ऑल्सो। ठीक, अभी 4:45 हो गया, आपको सुन लिए हैं, आपका ऑर्डर रिजर्व करते हैं। बनाना होगा तो बना देंगे, नहीं तो डिस्मिस। ठीक, इनकी जरूरत नहीं है सब्सटैंशियल क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आपके ये रख लें, आपको ये वापस मिल जाए। जी। Essay number 87 of 2025 for the Learned Council appearing on behalf of the appellant. The Learned Council submits that the appellant was inducted as a tenant by the dependent as back as on 1/2/1996 for a period of 11 months. However, on 13
However, the defendant continued to be a tenant, and while the tenancy was continuing, one agreement of sale dated 13/11/1997 was executed between the applicant number 1 and the defendant. Consequent thereto, an amount of rupees 2 lakh was paid, and 80,000 remained due, which was to be paid at the time of registration. He has further submitted that the status of landlord and tenant relationship between the parties had undergone a change upon agreement dated 13/11/1997. Agreement at 13/11/1997. 13/11/1997. Exhibit D. D. Within bracket Exhibit D. The learned counsel submits that the plaintiff did not have any title over the property, inasmuch as PW5 has admitted in his evidence that the property was a khas mahal property. He submits that the owner of the property is the state, and the plaintiff could not have entered into tenancy or even sell the property, as the property was a khas mahal property. The learned counsel has submitted that the plaintiff has defrauded the appellant by inducting the appellant as a tenant and entering into an agreement of sale. However, during the course of argument, it is not in dispute that the suit seeking specific performance of contract relating to agreement of sale dated 13/11/1997 has already been dismissed and the appeal has also been dismissed. The title suit regarding specific performance of contract was title suit number 171 of 2003, and the corresponding civil appeal is civil appeal number 2 of 2021. However, he submits that since the nature of relationship had undergone a change, therefore, the relationship of landlord and tenant did not exist post 13/11/1997. And therefore, the suit seeking recovery of possession on account of default in payment of rent after 13/11/1997 was not continued. The learned counsel has also submitted that as per the plaintiff, the defendant had defaulted in payment of rent from 13/1/1997 till 9/7/2003. But the claim for rent was made only for a period of 3 years prior to institution of the suit. He has also submitted that the period of default as recorded by the learned trial court is also for the period from 10/7/2000 to 9/7/2003. The learned counsel has relied upon the judgment passed by the Honorable Supreme Court reported in bracket 2000, bracket rules 9 SCC 339, and has referred to paragraph 6 and 8, 6, 8 and 9 of the same judgment, and submits that once there is an
agreement of sale with respect to the suit property, the relationship of landlord and tenant does not exist anymore, and therefore the suit seeking eviction was itself not made. That's it. Arguments concluded. बस एक पैराग्राफ पेज 10 देखिए जाए फर्स्ट अपडेट जजमेंट कौन सा? हाँ बताइए. पेज 10 में हाँ. Page 10. अपडेट जजमेंट बताइए. last paragraph. हाँ. Here it is an admitted fact that the suit premises is a government leased land and the plaintiff is not the leaseholder. So any such agreement for the transfer of the land by the plaintiff to the defendant will not fall within the ambit of legal transfer because the plaintiff is not the bona fide owner of the suit premises. The eviction suit was filed under section 11(1) of the BBC Act. For eviction, The learned counsel has referred to internal page 10 of the first appellate court judgment and has submitted that the facts to admitted that the suit premises is a government lease land and the plaintiff was not the leaseholder. So any agreement for transfer of land by the plaintiff to the defendant will not fall within the ambit of legal transfer because the plaintiff is not a bona fide owner of the suit premises. He submits that in spite of recording such finding, still the appellate court upheld the judgment of eviction filed by the learned client. That's it. अब कौन सा मैटर 4:45 बजे I'll just keep it for some time. I'll keep this also. ये जजमेंट आपका जब जजमेंट होगा तो आप ले लेंगे. आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आप ले लेंगे कल ले लेंगे. Serial number 4 should we have mentioned it and Should I mention in the morning? Did you mention it in the morning? should I mention day before yesterday night? That's how it is today. अच्छा आज mention slip दे दे your worship is slip दे दीजिए 5 बज गया. yes Is there any supplementary list? I don't have human rights. Do I? I have. Here should the next date of execution is 13th. So any date before that. Other side कौन? कोई नहीं you should order for them. अच्छा ऑर्डर. अच्छा कल कर दीजिए. कल कर दीजिए. 10:30 बजे आ जाइए. As first. आप अपने स्लिप दे. ये